फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर सक्सेस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंट बीकॉम एनईपी 75, जिसका चैप्टर है हमारा रिडक्शन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। दोनों मीडियम में मैं पढ़ाऊंगी, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम, मैंने दोनों में लिखा हुआ है। चलो अब हम सम नंबर करने वाले हैं 5। हेलन लिमिटेड करके दिया गया है हमको। ये सभी आईएमपी सम्स हैं जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में आने वाले हैं, जो प्रीवियस पेपर में भी आ गए हैं। चलो सबसे पहले हमको क्या दिया गया देख लेते हैं। हेलन लिमिटेड करके है, किसी की भी बुक्स में आगे पीछे ये सम हो सकता है, आप नाम देख लो। हेलन लिमिटेड करके है और जिसका प्रेफरेंस शेयर है हमारा 2 लाख रुपीज का, कैपिटल 2 लाख की है। ठीक है, चलो इसमें इंस्टॉलमेंट भी है और हमको क्या दिया गया है 10% प्रीमियम में रिटर्न करने का है। चलो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने शेयर है हमको क्या दी गई है, टोटल कैपिटल दी गई है और पर शेयर की वैल्यू दी गई है। तो 2 लाख डिवाइड बाय 100। प्रेफरेंस शेરની સંખ્યા કેટલી છે તો કે 2 લાખ શેર મૂડી છે, છેદમાં 100 રૂપિયાના શેર છે એટલે 2000 2000 આવી ગયા। ત્યાર પછી તમને જપ્ત કરેલા છે જે નીચે તમને આપેલું છે। प्रेफरेंस शेर जप्त कर्या त्यारबाद प्रेफरेंस 10% प्रीमियमे परत कर्या छे तो केटला जप्त करशे तो के 25 रुपीज। चलो तो 1000 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 40 रुपीज। माइनस कर देते हैं तो 1960 आ गया। अब कैपिटल कैसे आएगी तो 1960 इंटू पर वैल्यू क्या थी हमारी 100, तो इंटू 100 प्लस परत प्रीमियम, जो आपको प्रीमियम है रिटर्न के लिए जो प्रीमियम है वो हम प्लस कर देंगे इसमें 19600। फ्री रिजर्व अनामतों किस केस में हम देने वाले हैं तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। जनरल रिजर्व है 68,000, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम है 28,000, बैंक सिलक तो आती नहीं है। क्या बोला है उन्होंने, उपयोग करने बाद जिसमें हमको दिया गया है उसका यूज करने के बाद जो भी बचेगा हमको रिटर्न करने के लिए वो हम किस में से देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। किस में से देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो तो देख लेते हैं। 2,50,600 है, उसमें से 68,000 जनरल रिजर्व है और सिक्योरिटी प्रीमियम हमको कितना चाहिए, ओनली 90,600। ठीक है, तो भी कितना बचा 1,28,000। तो बाहर कितना हम कितना न्यू करेंगे हम तो 1,28,000 डिवाइड बाय 10 रुपीज। 10 रुपीज क्यों किया है हमने, उधर 10 रुपीज का पर है इसलिए किया है। ठीक है, चलो 10 रुपीज डिवाइड में हो गया 12,800 आ गया। प्रीमियम किस में से देंगे हम तो कि सिक्योरिटी प्रीमियम में से देंगे। उसके बाद कैपिटल किस में से देंगे 1,96,000 है। तो हमने देखा था कि जनरल रिजर्व सामान्य अनामतमांथी કેટલું દીધું હતું આપણે 68,000, તો બાકીનું વધ્યું ક્યાંથી કરશું, નવા શેર બહાર પાડશું। કેટલા નવા શેર બહાર પાડે આપણે 1,28,000। क्लियर, इधर तक किसी को डाउट हो तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। चलो उसके बाद जनरल एंट्रीज है, वो तो आपको मालूम ही है, हमने पहले सीखी हुई है। चलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर मूडी खाते उधार, तो फॉरफेट शेर जप्ती खाते 3,000 कई रीते शेर जप्ती आया ए समझावुं छुं तमने। टू कॉल इन एरियाज बाकी हप्ता खाते 1,000 बाकी हप्तो आपने आपेलो छे, अहींया छे 1,000 बाकी हप्तो અને 40 રૂપિયા લેખે તમને અહીંયા કીધું હતું કે જપ્તી છે તો 40 ગુણ્યા 100 રૂપિયાનો એક છે એટલે કેટલાની થઈ 4,000। એમાં બાકી હપ્તો કેટલાનો હતો આપણો 1,000, તો જપ્તી કેટલાની કરી છે એ લોકોએ 3,000। ક્લિયર, चलो सेकंड शेर जप्ती खाते उधार ते मूडी परत अनामत खाते फॉरफेट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3,000। उसके बाद जो हमारी मेन 4 एंट्री होती है वो फर्स्ट नंबर वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडक्शन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। चलो प्रेफरेंस शेयर मूडी खाते उधार, प्रेफरेंस परत प्रीमियम खाते उधार ते प्रेफरेंस शेयर होल्डर खाते। अमाउंट आ बने रहेशे, मैं बने में अलग अलग आम नोंध लखी दीधी छे जेथी गुजराती और इंग्लिश बने मीडियम ने हेल्पफुल रहे। चलो एना पछीनी आमां अमाउंट्स तो 1,96,000 ना हता, 19,600 तमारुं प्रीमियम छे એટલે टोटल આવી ગયું 2,15,600। क्लियर, चलो एना पछी फोर्थ नंबर ની एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जे आपणे नवा बार पाड्या छे एना माटे छे। बैंक खाते उधार ते इक्विटी शेयर मूडी खाते जमा। एना पछी छे सिक्योरिटी प्रीमियम जे आपणुं प्रीमियम छे एने आपणे करशुं तो सिक्योरिटी प्रीमियम खाते उधार ते रिडक्शन प्रीमियम, जामीनगीरी प्रीमियम खाते उधार ते परत प्रीमियम खाते जमा। पछी छे जनरल रिजर्व, अर्धुं आपणे जनरल रिजर्व मांथी पण लीधेलुं छे એટલે सामान्य अनामत खाते उधार ते मूडी परत अनामत खाते 68,000। आ सेना छे तो आपणे अहींया छे, जुओ तमारे प्रेफरेंस शेयर मूडी छे, तमे एक नवा बहार पाड्या छे અને બીજું છે શું કીધું છે તમને CRR
અને મૂડી ભરત અનામતમાંથી જનરલ રિઝર્વમાંથી દીધેલું છે એટલે આપણે અહીંયા બંનેની એન્ટ્રી કરવી પડશે नवा शेयर बाहर पड़ा एनी आईडी અને जनरल रिजर्वમાંથી देसो एनी आईडी क्लियर चलो उसके बाद क्या दिया गया हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक खाते 2,15,600 मैंने दोनों मीडियम में किया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलो अब नेक्स्ट सम देखते हैं हम सीखने वाले हैं सम नंबर 8 जो है विशाखा लिमिटेड करके जिसमें हमको दिया गया है કાયદાની જરૂરી જોગવાઈનું પાલન કરીને रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम थी परत કરવામાં આવ્યા यानी कि हमको 10% में उसको रिटर्न करने का है। નાણાં પરત કરતા પહેલા જે પ્રેફરન્સ હોલ્ડરના બાકી હપ્તા હતા તેઓના નાણાં ભરવાની નોટિસ આપવામાં આવી હતી। 40 शेयर धारण करनाराओ हफ्ताना नाणां भरी दीधा बाकीना भरता नहीं। जो 40 शेयर है उसका हमने पेमेंट कर दिया है बाकी का जो है वो हमारा नहीं है। चलो उसके बाद कंपनी हेतु माटे सामान्य अनामत 62,000 ने पूरेपूरी बाकी नो उपयोग कर्यो पछी डायरेक्टर ओछा में ओछा जरूरी इक्विटी शेयर जो हमको रिटर्न करने का है उसमें जनरल रिजर्व में से 62,000 देने का है और जो बचा रहेगा वो हमको क्या करना है इक्विटी शेयर इश्यू करने का है। चलो जेना नाणा मળી ગયા હતા रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर छेल्लो हफ्तो 20 रुपयानो હતો जो हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट था वो कितने रुपीस का था 20 रुपीस का। रोकाणो 23,750 में वेची देवामां जो हमने सेल कर दिया है। प्रेफरेंस शेयर ना नाणा परत कर्या पछी कंपनीए दर 2 जूना इक्विटी शेयर दीठ एक पूर्ण भरपाई इक्विटी शेयर बोनस तरीके डिविडेंड तरीके उपलब्ध नहीं तेवी आमनो अनामतोमांथी आपेल छे। क्या बोला है 2:1 2 इक्विटी शेयर ना बदला में एक बोनस शेयर आपवानो छे क्लियर। चलो अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। कॉल इन एरियाज बाकी हफ्तो केटलानो हतो आपणो बाकी हफ्तो 1600 रुपया छे तो 1600 रुपया अने एक 20 रुपयानो एटले केटला शेयर थया 80 शेयर थया। त्यारबाद केटला आपने मળી गया था कितना हमको मिल गया था 40 शेयर्स तो 40 × 20 तो कितना नहीं मिला हमको तो के 800 क्लियर। चलो अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर लेते हैं 1000 × 100 क्योंकि ये 100 का है और 1 लाख कैपिटल है डिवाइड में करेंगे तो 1000 ही आ जाएगा। 1000 × 100 1 लाख प्लस रिटर्न प्रीमियम 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख 10,000 क्लियर है। प्रीमियम किस में से हम देंगे हम उसका तो जनरल रिजर्व में से क्योंकि इसमें हमको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया नहीं है। अगर इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम दिया होता तो हम उसमें से देते क्लियर है। चलो 10,000 दे दिया। अब कैपिटल उन्होंने हमको बोला था क्या बोला था कि 62,000 है उसका यूज करने का और बाकी का जो है उसको इश्यू करने का है इक्विटी शेयर। अब 62,000 था पर 10,000 तो हमने किस में दे दिया प्रीमियम में दे दिया। अब कितना बचा तो 52,000 तो कितने हम इश्यू करेंगे 48,000 क्लियर है। चलो कैसे करते हैं देख लिए कर लिया हमने ये पूरा। चलो बोनस शेयर में क्या बोला था हमको 2:1 2:1 टोटल कितने शेयर है हमारे इक्विटी में से दिए जाते हैं 2 लाख है 10 रुपीस का है 2000 इक्विटी शेयर है तो 2000 इक्विटी शेयर्स टू कितने हो गए तो 1000 × 100 इज इक्वल टू 1 लाख कैपिटल शेयर मूड़ी जो हमको दिया गया। मैंने इंग्लिश और गुजराती दोनों मीडियम में लिखा हुआ है कहीं भी आपको डाउट लगे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। चलो अब इसकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस कॉल इन एरियाज 800 बैंक खाते उधार ते प्रेफरेंस शेयरना बाकी हप्ता खाते क्लियर। गुजराती और इंग्लिश बने में एक पछी एक आमनो लखेली हशे आपणी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खाते उधार रिडक्शन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर मूड़ी खाते उधार प्रेफरेंस शेयर परत प्रीमियम खाते उधार ते प्रेफरेंस शेयर होल्डर खाते जे आपणी ओरिजिनल अमाउंट है एज। चलो त्यार पछी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बैंक खाते उधार ते इक्विटी शेयर मूड़ी खाते जमा 48,000 बैंक खाते उधार ते इक्विटी शेयर मूड़ी खाते बैंक खाते उधार नफा नुकसान खाते उधार ते रोकाण खाते क्लियर। बैंक खाते केटलामां वेचे छे एणे कीधुं हतुं 23,750 हवे रोकाणो तमे अहींया जोई शको छो केटलाना छे आपणा पासे बिन चालू रोकाणो 25,000 इन्वेस्टमेंट हमारे थे 25,000 सेल हमने की है 23,750 हमको क्या हुआ लॉस हुआ यानी पीएनएल अकाउंट क्या होता है डेबिट होता है क्लियर है। चलो उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिडक्शन प्रीमियम 10,000 जो हमने प्रीमियम रिटर्न किया किसमें से किया था जनरल रिजर्व में से तो इसके लिए वो डेबिट हो गया। लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रेफरेंस सस्पेंस अकाउंट यानी कि उपलक खाते उपलक आवशे
चलो प्रेफरन्स शेयर होल्डर खाते उधार ते बैंक खाते ते प्रेफरन्स उपलक खाते 1,10,960 મળી ગયા હતા એના માટે અને 40 આપણને નથી મળ્યા એટલે એને શું કરી નાખ્યું આપણે ઉપલક કર્યું. અહીંયા તમે જોયું હતું 1,000 ના આપણા ટોટલ હતા એમાંથી ન મળેલા કેટલા 80 નો હપ્તો હતો એમાં 40 મળી ગયા હતા એટલે 40 આપણને શું થયા હતું નતા મળ્યા તો એને આપણે શું કરી નાખ્યું ઉપલક એટલે એ ઉપલક ખાતે 40. ક્લિયર. દેન મૂડી પરત અનામત ખાતે ઉધાર સામાન્ય અનામત ખાતે ઉધાર તે બોનસ શેરહોલ્ડર બોનસ શેમાંથી આપશું આપણે તો કે CRR અને કેપિટલ રિઝર્વ 52 અને 48. ક્લિયર. ચલો પછી બોનસ ટુ શેરહોલ્ડર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ બોનસ શેરહોલ્ડર ખાતે ઉધાર તે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે 1 લાખનું જે આપણું બોનસ હતું તે એની બેલેન્સ શીટ પણ આપણે જોઈ લઈએ. ઇક્વિટી શેર મૂડી 2 લાખ તો જે આપણા હતા એ જ ઓરિજિનલ એના પછી 1 લાખ આપણે જે નવા ઇસ્યુ કર્યા હતા એ અને 48,000 જે CRR માંથી આપણને નવા ઇસ્યુ કર્યા હતા. ચલો તમને એક વખત તો બી બતાવી દઉં અહીંયાથી આપણે જે નવા બહાર પાડ્યા હતા 48,000 ના એ આ 1 લાખના જે આપણા બોનસ ના હતા એ અને 2 લાખ જે આપણી બુક્સમાં ઓલરેડી આપણને આપેલા છે 2 લાખ. ક્લિયર. 2 લાખ 1 લાખ ને 48,000 એટલે 3,48,000 આવી ગયું. ત્યારબાદ નફા નુકસાન ખાતું જનરલ રિઝર્વનો તો આપણે યુઝ કરી નાખ્યો છે એટલે એ તો આવશે જ નહીં પૂરેપૂરું યુઝ કરી નાખ્યું છે. P&L અકાઉન્ટ 10,000 છે 10,000 માંથી આપણો ખાલી કેટલો યુઝ કર્યો છે 1250 નો જે આમ નોંધમાં તમે જોઈ શકો છો. આપણો જે લોસ ગયો હતો ના ખબર હોય તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં 1250 ઈ માઇનસ કરીએ એટલે 8750. સામાન્ય અનામત જે નવાસરથી બહાર પાડવામાં આવેલી છે એના માટે કીધું છે આપણને 2000. સસ્પેન્સ એટલે કે જે તમારું ઉપલક ખાતે કરીને છે 4400 હતું અને 800 એમાંથી આપણને મળી ગયું હતું એટલે એ માઇનસ કરી દીધું. બેંક લોન ખાતે જે ડાયરેક્ટ લખાઈ જશે આપણું લેણદારો અને કર જે ડાયરેક્ટ આપેલા છે એનું જ કોપી લખી નાખવાના છે. ક્લિયર. ચલો એસેટ્સ બાજુ જોઈ લઈએ. લેન્ડ પૂરેપૂરી આવી જશે મશીનરી પણ એમનેમ આવશે સ્ટોક પણ એમનેમ આવશે ડેપ્ટર્સ પણ એમનેમ આવશે બેંકમાં ઇસ્યુ આવશે આપણી પાસે છે 47,400 પ્લસ આપણને બાકી હપ્તો જે મળ્યો હતો એના 800 48,000 જે આપણે નવા કર્યા હતા એના પણ આપણને બેંકમાં પૈસા આવશે એના માટે 23,750 જે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રોકાણો સેલ કર્યા છે એના અને 10,56 જે આપણે પેમેન્ટ આપેલું છે એના. જોઈ શકો છો તમે જ્યાં જ્યાં બેંકનો યુઝ થતો હોય તમારે એ રીતે એક વખત દેવાનું જ્યાં ડેબિટ થશે તે પ્લસ અને ક્રેડિટ થશે માઇનસ. જેમ કે અહીંયા ડેબિટ થાય છે 800 પ્લસ અહીંયા પણ ડેબિટ થાય છે પ્લસ અહીંયા પણ ડેબિટ થાય છે પ્લસ અહીંયા ક્રેડિટ થાય છે તો માઇનસ બીજે તો ક્યાંય છે નહીં. ક્લિયર. એટલે બંને સાઈડ તમે જોશો તો આન્સર તમારો રેડી થઈ જશે. चलो હવે नेक्स्ट सम આપણે જોઈએ करने वाले हैं सम नंबर 9 एक्स लिमिटेड करके जो हमको दिया गया है. चलो જે પ્રેફરન્સ શેરહોલ્ડરના હપ્તા બાકી હતા તેઓને જરૂરી નોટિસો આપવામાં આવી હતી અને હપ્તાના નાણાં નહીં ભરવાને કારણે તેઓને શેરોને જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રેફરન્સ શેરના નાણાં 30/9/23 ના રોજ પરત કરવા પાત્ર હતા. નાણાં પરત કરવાના હેતુ માટે કંપનીએ તેને ઇક્વિટી શેરહોલ્ડરને હકના ધોરણો 30% પ્રીમિયમ 2000 શેર કંપનીએ તેની પર રકમ મળી ગઈ ઇસ્યુ કર્યા છે બહાર પાડ્યા છે એને 30/9/23 ખાસ અને આ ડેટ છે એને ધ્યાન રાખીશું આપણે. પ્રેફરન્સ શેરહોલ્ડરને તેમના ચડેલા ડિવિડન્ડ સહિત પ્રેફરન્સ શેરના નાણાં પરત કરવામાં આવ્યા છે. મૂડીકરણ કરેલા અને બાકીની મહેસૂલી નફાની બાકી તેમના ઇક્વિટી શેરનું 2 શેરના બદલામાં 1 શેર તરીકે બોનસ આપવાનું છે. ચલો આપણે ગણતરી પર જઈએ. સૌથી પહેલા જપ્તી કેટલાની આવશે 2000 ભાગ્યા 20 એટલે 100 ની ફોરફેટ जप्ती આવશે. रिडक्शन परत कितने में परत किए जाएंगे हमको चलो उसका हमको दिया गया है जे अपनी 2 लाख છે શેર મૂડી એના પર 80 રૂપિયા મંગાવેલા છે એટલે ભાગ્યા કરી દીધા એટલે 2500 માંથી 100 તો જપ્ત કરી લીધા છે એટલે કેટલા વધશે 2400. ક્લિયર છે. ચલો પ્રેફરન્સ શેર 2400 ગુણ્યા 100 એટલે 2,40,000 પ્રીમિયમ એનું આપેલું નથી કેટલા ટકા પ્રીમિયમ રિટર્ન કરવાનું છે એટલે 2,40,000 આવી ગયા. क्लियर है. चलो अब हमको फाइनल कॉल छेल्लो हफ्तो 2400 गुणिया 20 केम के 2400 ज आपड़ा हता 20 रुपया नो एक कीधो छे एने छेल्लो हफ्तो तो 2400 गुणिया 20 એટલે કેટલા આવશે 48,000. लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा कितना आएगा फाइनल कॉल 48,000. क्लियर. चलो न्यू शेयर जो हमको बाहर करने का है 2000 है 30% प्रीमियम है. प्रीमियम को हम बाद में देखते हैं पहले ओरिजिनल कैपिटल देख लेते हैं.
2000 इंटू 100 रुपीज पर है, तो इंटू 100 सॉरी 10 रुपीज 100 आएगा, सॉरी इसमें गलती से मिस्टेक हो गई। 2000 इंटू 100 2 लाख 2:1 तो 52,000 है। 52,000 कहाँ से आया हमारा, तो 48,000 तो हमको दिया गया है इधर का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट था वो, और हमको क्या बोला है, मूડીકરણ करेला नफा અને બાકીની મહેસૂલી जो लास्ट में बचा है उस पे हमको देने का है बोनस है। ठीक है, चलो तो वो बाद में देखते हैं, पहले हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। फर्स्ट, प्रेफरन्स शेयर मूडी खाते उधार, शेयर जप्ती खाते ते बाकी हफ्ता खाते, प्रेफरन्स शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफेट शेयर टू कॉल इन अकाउंट 8,000 6,000 2,000 हमको जो हमारा इंस्टॉलमेंट है वो 8,000 जो हमारी 80 रुपीज में है तो हमको दिया गया है वो, और 6,000 हमारी फॉरफेट हो गई शेयर जप्ती। सेकेंड, फॉरफेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर जप्ती खाते उधार તે મૂડી અનામત ખાતે જમા 6,000 ફાઇનલ કોલ જે છેલ્લો હપ્તો આપણે મંગાવીએ છીએ એના માટે પ્રેફરન્સ શેર ફાઇનલ કોલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, પ્રેફરન્સ શેરના છેલ્લા હપ્તા ખાતે ઉધાર તે પ્રેફરન્સ શેરની શેર મૂડી ખાતે। દેન બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રેફરન્સ શેર ફાઇનલ કોલ અકાઉન્ટ, જે આપણો છેલ્લો હપ્તો મંગાવીએ છીએ તો પૈસા આપણા પાસે આવે છે એના માટે 48,000। નેક્સ્ટ, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडक्शन प्रीमियम अकाउंट डेबिट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना कितना आएगा, तो प्रेफरेंस तो આપણને ખબર જ છે 2400 ગુણ્યા 100 જે આપણું ઓરિજિનલ હતું 2,40,000, 4 રૂપિયા પ્રીમિયમ આવી ગયું। કઈ રીતે આવ્યું, તો 9600 જે આપણું 2400 ગુણ્યા 4 કરશું એના માટે થઈને। હવે એને કીધું છે ડિવિડન્ડ દેવાનું છે, તો ડિવિડન્ડ કઈ રીતે દઈ શકીએ, તો 2400 ગુણ્યા 80% ગુણ્યા 6/12 કેમ કે આપણું 39 સુધી જ છે એના માટે થઈને, અને ગુણ્યા 10% જે આપણું 10%નું છે એના માટે, એટલે એ પણ 9600 આવ્યા અને બધાનું ટોટલ 2,59,200। ચલો ગુજરાતીમાં પણ જોઈ લઈએ એને આપણે। પ્રેફરન્સ શેર મૂડી ખાતે ઉધાર, પરત પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર, ડિવિડન્ડ ખાતે ઉધાર તે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ખાતે। દેન પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર રિડક્શન પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેપિટલ રિઝર્વ, જે આપણું પરત પ્રીમિયમ છે એના ખાતે ઉધાર તે મૂડી અનામત ખાતે જમા 400। ક્લિયર, ચલો ત્યારબાદ પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડિવિડન્ડ, જે આપણે ડિવિડન્ડ પેમેન્ટ કરીએ છીએ એના માટેની આમ નોંધ છે આ, નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર તે ડિવિડન્ડ ખાતે। બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ટુ સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ, જે આપણે નવા બહાર પાડીએ છીએ 3 રૂપિયા 30%ના પ્રીમિયમે, જે આપણને અહીંયા કહેલું હતું છે 30%ના પ્રીમિયમે રિટર્ન કરવાનું। ચલો તો 2000 इंटू 10, 2000 इंटू 3 અને 2000 इंटू 30। बैंक खाते उधार, इक्विटी शेयर मूडी खाते जमा, जामीनगिरी प्रीमियम खाते जमा। मैंने इंग्लिश मीडियम में भी स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करो। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या तो मेरे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। हमारी चैनल है सक्सेस एकेडमी 1639। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सामान्य अनामत खाते उधार, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, मूडी परत अनामत खाते जमा 2,20,000 2,20,000। चलो नेक्स्ट, जो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,59,200 બંને માં એ જ આવશે। પ્રેફરન્સ હોલ્ડર ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે। હવે જે આપણે બોનસ દઈએ છીએ સીઆરઆર, કેપિટલ રિઝર્વ, સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ, જનરલ રિઝર્વ। સીઆરઆર અકાઉન્ટ એટલે જે આપણે આગળ જોયું હતું 2,20,000નું હતું, કેપિટલ રિઝર્વ 6,400નું, સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ જે આપણે ઇસ્યુ કર્યું છે 6,000નું, જનરલ રિઝર્વ 27,600નું। ક્લિયર, ચલો તે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ખાતે જમા 2,60,000। મૂડી પરત અનામત, મૂડી અનામત પછી જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે, સામાન્ય અનામત ખાતે તે શેર હોલ્ડરના બોનસ ખાતે। દેન શેર હોલ્ડર બોનસ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, શેર હોલ્ડરના બોનસ ખાતે ઉધાર તે શેર મૂડી ખાતે જમા। હવે બોનસ શેર છે ક્યાંથી આવ્યા છે ચલો તમને સમજાવી દઉં। जो हमने इधर देखते हैं, चलो 5 लाख का है, 10 रुपीज है यानी 50,000 आया। क्लियर,
प्लस 2000 हमने न्यू इश्यू किए, कितना आ गया 52,000। क्लियर? तो 2:1, तो 52,000 इज टू क्वेश्चन मार्क 2,60,000 जो हमारा बोनस शेयर आ गया। और किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे को। क्लियर? चलो अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख की थी, 2,60,000 जो हमने अभी बोनस में किया और 20,000 जो इश्यू किया था वो है। क्लियर है? चलो अनामत અને વધારો, એમાં સામાન્ય અનામત તો 6 લાખની હતી આપણા પાસે, એમાંથી આપણે યુઝ કેટલી કરી છે તો કે 2,20,000ની યુઝ કરી હતી અને 27,602 જગ્યાએ આપણે આમનોંધમાં તમે જોઈ શકો છો 2 જગ્યાએ યુઝ કરેલી છે। પછી નફા નુકસાન ખાતું 1 લાખનું છે, એમાંથી આપણે 9600 યુઝ કર્યા છે એટલે 90,400। ये चैप्टर थोड़ा टफ है, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और 3 सम्स करेंगे। सभी चैप्टर्स के हम ऐसे ही आईएमपी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको आ जाएगा बिल्कुल। चलो चालू देवा, उसमें क्या है क्रेडिटर्स, लेनदार, फ्री लेट। मैंने दोनों मीडियम में लिखा है क्योंकि किसी को जो भी हो, इंग्लिश हो चाहे गुजराती हो, दोनों को आपको हेल्पफुल हो सके। और मैंने पूरा सम ही लिखा है, आप अपनी बुक्स में भी नोट्स कर देना। और जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगी अपनी, वैसे ही मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन भी भेज दूंगी। चलो फिक्स्ड एसेट्स स्थिर मिलकतो 10 લાખની, સ્ટોક આપેલો છે 2 લાખ, દેવાદાર છે 2 લાખ, બેંક ડાયરેક્ટ તો નહીં લખી શકીએ, 3,08,000ની હતી, 48,000નું આપણે ઇસ્યુ કરેલું છે, 26,000 પણ બહાર પાડેલું છે એ છે, ને માઇનસ 2,59,200 જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। બેંક ખાતે તમારે આમ નોંધમાં એક વખત ચેક કરી લેવાનું, જ્યાં જ્યાં ડેબિટ છે ઉધાર છે ત્યાં ત્યાં પ્લસ અને જ્યાં જ્યાં ક્રેડિટ છે ત્યાં ત્યાં માઇનસ। ચલો બંને સાઈડ ટોટલ થઈ જાય છે આપણું 15,22,800, 15,22,800। आप लोग देख सकते हैं पूरा। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम और सम्स करेंगे।